ओके हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि समस्त मो साउंड सब या क्लियर थिबो है ना। चलंतु समस्त को आरंभ करिवा क्लास समस्त को वेलकम करि दियो, समस्त को डाकी दियो, अधिक अधिक पिला जॉइन करिवे ना। ओके जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट भीतर स्टार्ट करियो पिला माने। तो समस्त को अनुरोध प्लीज टिके शेयर कर दियो है ना। ओके तो आरंभ करिवा ता आगर टिके मु शेयर कर दउची है ना। समस्त 5 मिनट भीतर आरंभ कर दे, तो समस्त जॉइन हो जा है ना। आज क्लास टी बड़ रहिबो, टिके अधिक रहिबो क्लास टी है ना। देखो क्वेश्चन आंसर दो प्रीवियस क्वेश्चन दा, तो समस्त यार कोन अब राइट आंसर टा दियो थो हां। कोन अब राइट आंसर टा यार दियो। हार्ड अछि, कष्ट अछि, रीजनिंग रो भी 2-4 क्वेश्चन अछि है ना। इजी भी अछि, बहुत इजी अछि। 5 मिनट भीतर आरंभ करवा। यार आंसर टी दो तो सब कोन कोन से कमेंट बॉक्स रे। अरे यार मैनेजमेंट ऑनलाइन अच्छा हो प्लीज, समस्त को अनुरोध की। और कहीं पिला ने कोड गले सब। तो छाड़ देखो कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन ओडिशा। ओके प्रथम महिला स्पीकर इन ओडिशा ओके किए थे? द्रौपदी मुर्मू, प्रमिला मल्लिक, नंदिनी शतपथी एंड जयंती पट्टनायक। जदि हम राइट आंसर देखा, राइट आंसर कौन? प्रमिला मल्लिक। ओके ऑप्शन कौन रहा? प्रमिला मल्लिक इज द राइट आंसर है ना। प्रमिला मल्लिक रहिबो राइट आंसर। ओके देखो नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए
National Unity Day celebrate on to commemorate the birth anniversary of which leader. Okay, कौन रहेगा right? The National Unity Day celebrate on the commemorate birth anniversary of which leader? कौन महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर. जदि कौन रहेगा राइट आंसर कमेंट बॉक्स रे लिखो है ना. जदि हमें देखिबा यार राइट आंसर टी हमें कौन पाइबा ए जगह रे ऑप्शन सी सर्व सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके कौन रहबो ऑप्शन बी. ओके सरदार वल्लभ भाई पटेल. द मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट देखो गोटे क्वेश्चन होची मैत्री थर्मल सुपर थर्मल प्रोजेक्ट व्हिच कंट्री लोकेटेड को कंट्री लोकेटेड अछि मैत्री सुपर थर्मल प्रोजेक्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ओके को कंट्री रे अछि को इंडिया श्रीलंका नेपाल बांग्लादेश को जगह रे रहबो कमेंट बॉक्स रे लिखो तुम पे एती मेहनत करा जाउची प्लीज तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब टे करो सो दैट कि तुम हमें समस्ते आगु बढ़ी पारे एकठी होना नहीं. देखो राइट आंसर हो बांग्लादेश. ओके बांग्लादेश हो राइट आंसर है ना. बांग्लादेश ऑप्शन डी है ना. ऑप्शन डी और राइट आंसर. ओके ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीयू. जीपीयू फुल फॉर्म कौन रोची कौन जनरल प्रोसेसिंग यूनिट ग्राउंड प्रोसेसिंग यूनिट ग्राफिकल यूनिट प्रोसेसर galvanic processing unit कौन है राइट आंसर. ओके ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन सी. ओके ऑप्शन सी जीपीयू रो फुल फॉर्म होची ऑप्शन सी. ओके ऑप्शन सी कौन ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is designed to control the operation of the computer. Okay computer टाको ऑपरेट करबा पे कोन डिजाइन है को ऑपरेशन जिंस डिजाइन है ओके कोन यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को टाइप सॉफ्टवेयर टू फॉलोइंग डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर रो ऑपरेशन को कंट्रोल करबा पे कोन करा जाई छै. ओके सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी. ओके कोन रहबो सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा which of the following device provided the communication between computer and outer world. Okay जो देखिबा या भीतर कोडा which of the following device provide the communication between computer and outer world. Okay कंप्यूटर आ आउटर वर्ल्ड सहित जदि गोटे इंटरलिंक स्थापन करे तो को डिवाइस है कोन कॉम्पैक्ट ड्राइवर आईओ और स्टोरेज. अच्छा आईओ माने होची इनपुट आउटपुट डिवाइस है पण इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑप्शन एटा ही राइट आंसर हो ऑप्शन बी. ओके इनपुट आउटपुट डिवाइस इज राइट आंसर. ओके input output is right answer over. Next question which of the following can access the server. Okay which of the following can access the server web client web user and देखिए browser and web server कौन रहेगा है ना. देखो वेब क्लाइंट ऑप्शन है ना वेब क्लाइंट कैन एक्सेस द सर्वर. ओके किए करते हो वेब क्लाइंट कैन एक्सेस द सर्वर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चार जीटीपी 4. ओके देखो चार जीटीपी जो रहिला एटा गुट कोन एटा गुट कोन इज यू नो नेटवर्क मॉडल लाल एलएलएम जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल लार्ज एक्सप्रेशन मॉडल एलईएम रहबो या ट्रेनिंग डाटा मॉडल टीडीएम रहबो कौन रहबो राइट आंसर रहबो. देखो राइट आंसर कौन रहबो लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑप्शन बी. ओके कौन रहबो लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज राइट आंसर. ओके मन रखि दाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा ओएसएस ट्रांसफर. ओएसएस रो फुल फॉर्म कौन हो. यस 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 ओडब्ल्यूएस रो फुल फॉर्म कौन हो ओपन सिस्टम सर्विस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर ओपन सिंक्रोनाइज्ड सॉफ्टवेयर कौन रहबो राइट आंसर यार. जदि आमे यार राइट आंसर टी देखिबा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑप्शन बी रहबला ओएसएस रो फुल फॉर्म कौन रहबो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्राउजर. या भीतर कोडा कोडा ब्राउजर नुहे कहले देखिए नॉट लिखा है नहीं जगह व्हाट इज द नॉट टाइप ऑफ अ ब्राउजर. ओके नेटस्केप और फेसबुक मोजिला क्रोम. जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो यार बहुत गुडा क्वेश्चन अछि करिया को बहुत गुडा क्वेश्चन अछि. ओके नेक्स्ट देखिए राइट ऑफ फेसबुक. ओके फेसबुक है ना ऑप्शन बी रहबला. नेक्स्ट देखो आईएसपी स्टैंड्स फॉर. ओके आईएसपी व्हाट डू यू मीन बाय आईएसपी इंटरनेट सिस्टम प्रोसेसिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटेलिजेंट सिस्टम प्रोसेसिंग इंटरनेट सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ओके कमेंट बॉक्स में लिखो एडम आंसर कहबी एडम आंसर कहबी नहीं हला आईएसपी रो फुल फॉर्म कहबी नहीं आंसर तुम समस्त कमेंट बॉक्स में लिखो. ओके राइट आंसर which protocol provides email facility among the different hosts. Okay which protocol provides email facility among the hosts कौन है FTP SMTP Telnet SNMP. Okay which protocol को protocol टा provide करछि email facility को हला राइट आंसर रहबो ऑप्शन बी SMTP कौन रहबो SMTP. Okay next देखो graphical pictures that
represent an object like files, folders and etc. Okay, जो देखा कंप्यूटर गोटे ग्राफिकल पिक्चर अच्छी जोटा कि रिप्रेजेंट कौन कर कौन सी फाइल को फोल्डर को रिप्रेजेंट करछि दैट इज कॉल्ड टास्क बार विंडोज आइकॉन्स और डेस्कटॉप ओके যদি আমরা দেখি অপশন সি হবো আইকনস কোনসি বি আইকন जोटा कि फाइल आइकन फोल्डर आइकन এই সব আইকন গুড়া থাকে হলা What is the full form of Gmail? Okay, Gmail full form कौन? What is the full form of Gmail? Gmail कौन? Google Mail, Google Meet, Google Minar अरे ऑप्शन तो अच्छी ऑप्शन ए रहबा कौन Google Mail है Google Mail है Gmail फॉर्म मुझे Google Mail ओके इजी क्वेश्चन गुड़ा को ना এটা previous question students ना previous question next देखो select the word which completes the given sentence okay कौन रोज इधर चार्ल्स बाबेज desk computer invent sorry is a computer inventor ହେଲା was a desk doctor chemist physics and mathematician चार्ल्स बाबेज जन कौन थे डॉक्टर थे केमिस्ट थे फिजिसिस्ट थे अथवा मैथमेटिशियन थे ऑब्वियसली मैथमेटिशियन थे है ना ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following word describe the term email okay जो देखिए email रो प्रकृति कौन है इलेक्ट्रॉनिक मेल था एक्सप्रेसिव मेल था एनर्जेटिक मेल था अरे इलेक्ट्रॉनिक मेल था कौन रहो इलेक्ट्रिक ना इलेक्ट्रॉनिक मेल था इलेक्ट्रिक मेल ना इलेक्ट्रॉनिक मेल okay it is electronic mail okay option mail hello electronic mail option D okay मन रखी था next question जीवा next question when was the Google search engine created केबे Google search engine create कराइला ना when was the Google search engine created को मसिया रे Google search engine को invent कराइला 1969 1996 1998 2008 okay जदि हमें राइट आंसर में कौन पाइयो या भीतर कमेंट बॉक्स रे समस्त कमेंट करिवो ओके 1998 is the right answer है 1990 option C okay कौन होगा 1998 option C is the right answer okay मन रखो next question जो what does a byte represent in the common computer okay what does a byte represent in the common computer is a data it is software is the hardware in none of them okay ଗୋଟେ कंप्यूटर रे बाइट रो काम कोन थाए है ना कोन थाए ता कॉमनली कोन पे यूज इट्स अ डाटा ओके डाटा बाइट्स इट्स अ डाटा मन रखिता ऑप्शन ए ओके ऑप्शन ए रहबो ना next question who wrote the first computer program प्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम किए सेरा लिखिथिले ओके who wrote the first computer program ada lovens charles babbage harman alrith and jose marin jacquard okay रहबो राइट आंसर कौन रहबो राइट आंसर ओके प्रथम रहबो ada lovens ओके ऑप्शन ए इज राइट आंसर कौन रहबो ऑप्शन ए हैला ada lovens इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा करेक्ट कोडा मैच करे हला करेक्ट स्पेलिंग आ भीतर कोडा ना बिहेवियर करेक्ट स्पेलिंग कोन रहबो समझ यार एटा तो जति जो ऑनलाइन देखु तो कमेंट भी कोन समस्त एती तो जानथिबो कि नहीं यार हम तो राइट कोडा रॉन्ग कोडा ना तो एती कमेंट करो कि नहीं ऑप्शन 1 2 3 भीतर कोडा हो को स्पेलिंग टा हो कहलो देखिबा आ भी तो कोडा राइट स्पेलिंग हो कहलो ओके ऑप्शन ए बिहेवियर है ना ऑप्शन बी बी एच ए वी आई ओ यू आर ओके ऑप्शन बी है ना मन रखी सिलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन दैट ऑपोजिट वर्ड इन द पॉपुलर रो ऑपोजिट पूजा बिहेवियर बहुत बढ़िया है ना ओके बहुत बढ़िया पूजा राइट आंसर कौन रहो जो ऑपोजिट वर्ड ऑफ पॉपुलर रो ऑपोजिट वर्ड कौन रहो ऑपोजिट वर्ड ऑफ पॉपुलर अनसीन अनक्लियर अनवांटेड अनडाउटेड ओके कौन रहो राइट आंसर Pranam, very good morning. Now, select the word which means the opposite word of the popular, unseen, unclear, unwanted, undoubted. Unseen. बहुत बढ़िया ऑप्शन ए इज राइट आंसर है ना ऑप्शन ए इज राइट आंसर अनसीन होगा राइट आंसर है ना आउ किसी ऑप्शन ता सहित खाप खाऊ नाही जेतु आ कोन करिया ना शुद्ध निर्णय कर शुद्ध वाक्य आ भीतर कोडा देखो शुद्ध शब्दटी लेखो हला विषन्न 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 ये विषन्न भीतर को विषन्नटा भलो अछि हला ए बी सी डी भीतर कोडा भलो देखिबा ए ना 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 विषन्न एटा होछि ऑप्शन बी राइट कम जो ऊपर जो रेफो अछि सेटा होछि राइट आंसर हला ऑप्शन बी इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इजराइल कैपिटल कौन कहले देखियो पूजा व्हाट द कैपिटल ऑफ इजराइल वर्तमान इजराइल कैपिटल कौन तेल अवीव द जेरूसलम
कौन है राइट आंसर? ओके, गाजा ऊपर तो अटैक करछि बेरुत तो अलग कंट्री, तो तेल अवीव और जेरूसलम या भीतर कोड़ा राइट आंसर? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल? ओके, रेप लागेनी? ओहो, लागेनी नहीं? ओके, और से किसी ने मुझे रिकंसीडर करे दे पर हैला, ओडियाटा मु टिके सेटा कंसीडर आउथर करे दे, मुडा चेक करी। ओके ओके, जदि सेटा ठीक हेइतो देन ऑप्शन ने ठीक हेइतो। ओके, हो किछ ऑप्शन नहीं। ओके, ऑप्शन कैपिटल ऑफ इजराइल, कैपिटल ऑफ इजराइल कौन? इजराइल कैपिटल कौन? जेरूसलम। ओके, जेरूसलम। ऑप्शन बी, इजराइल कैपिटल कौन? जेरूसलम। ओके, इजराइल कैपिटल इज जेरूसलम। ओके, व्हिच नंबर कम नेक्स्ट इन गिवन सिक्वेंस? ओके, पूजा मार टिके समय दोची 2 मिनिट समय देली, 2 मिनिट एटा सॉल्व करो। कौन है राइट आंसर है ना? 12 13 15 18 22 तापर कौन आसियो? 27। बहुत बढ़िया, 2 मिनिट भी लागलानी। हां, बहुत बढ़िया, 27 इज राइट आंसर है ना? 27 आसियो। ओके है ना? 25 बास बास, बहुत बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया, राइट आंसर 27। ओके, देखो रिया कोडेड एज ए, बहुत बढ़िया मंदिर इनपुट है ना? रिया कोडेड एज ए एज 1, देन हाउ विल सी रिलेटेड कोड? सी इज कोड सी, देन तार कोड टा कौन रहइबो? राइट आंसर को 1 3 4 2 3 4 5 मंदिर इनपुट है। तीन ही, बहुत बढ़िया। हाँ, तीन ही होगा राइट आंसर। तीन ही होगा तो फाइंड द लास्ट टर्म। प्रणाम 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 मंदिर है ना? फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। ओके, यार लास्ट टर्म कौन हो? ए बी सी बी, बी सी ई डी, कौन रहो? राइट आंसर टा एफ ई एफ ई। जा हो, बहुत बड़े राइट आंसर है ना? बहुत बड़े, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अच्छा दादा, use the relationship between the letter of the first two term to find the missing term। ट्रिपल ए बी सी डी, ट्रिपल भी कौन होगा तापरे? डब्ल्यू एक्स वाई, कौन है मंदरी? ऑप्शन है, बहुत बढ़िया है ना? डब्ल्यू एक्स वाई। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म इज द सीक्वेंस है ना? एक एक प्लस दुई, तापरे एक दुई तीन, तापरे एक दुई तीन चार, तापरे कौन हो? 15, बहुत बड़ा 15 होगा। ओके, 15 होगा। देखो एटा तो क्या आसबनी मु भावी है ना? तथा मु पचार देती, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेस्ट अ फाइल है ना? गोटे फाइल को जो पेस्ट करार अच्छी तो कौन करा से जगह कहला? कंट्रोल सी, कंट्रोल पी, कंट्रोल भी, कंट्रोल एक्स, यूके कंट्रोल भी। से यूके लिखार कारण कौन? है कंट्रोल भी। ओके, कंट्रोल भी। ओके, select the most appropriate word which is completes the given sentence। Computer machines can do sequence of arithmetic at dash words, long logical physical continuous ना? यूके टा टाइपिंग है लाओ। ओह, किस देखो कौन हम लॉजिकल, लॉजिकल कंट्रोल भी कौन? ऑप्शन बी लॉजिकल, बहुत बड़े ऑप्शन बी लॉजिकल। ओके, लॉजिकल हमारा राइट आंसर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, select the word which complete the given sentence। A computer network is a group of desks which can share resources, files, servers, network, computers। पहली है सुधा, ओ सुधा सर्वर, एनीवन? कौन हो मंजरी? देखो
Computer network is a group of computers. Okay, computer network is a group of computer of which can share resources. Okay, it's a group of computer वाला ऑप्शन डी बुझल ना ओके बहुत उड़ा अभी एक मार्केट जैसे ना तुम्हारा है ना नहीं व्हाट इज एमएस वर्ड अच्छा गोटे समस्त अनुरोध कि अरे मो काली नोटिफाई करथिली हमर ग्रुप रे कि रेलवे रो पुणी थरे आउथरे एनटीपीसी बाची हला बहुत गुडाए बहुत गुडाए जेमि 8000 समथिंग पोस्ट बाजला तो समस्त अप्लाई करो हला 23 तारिख को आई थिंक अप्लाई होबना कोन तो अप्लाई करियो ओके MS Word, a big word, a dictionary, MS word processor, computer name. Okay. The right answer is option C word processor. Word MS Word is a word processor. Yes or no? Hala, word processor. By default, your document prints in dash mode, landscape, page setup, portrait, print preview. जदि तुम कौन प्रिंट करते तार डिफॉल्ट कौन रही पारे लैंडस्केप तो रही सहित कौन रही पोर्ट्रेट ओके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है ना ऑप्शन सी देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओडिशा नेबरिंग स्टेट एटा तो काको जाना नथियो मु भाउथिला ओडिसा रे एटा के नेबरिंग स्टेट मु जानि मु तो जाननी है हां ना नहीं पेज सेटअप क्या गया पेज सेटअप नहीं होगा जी पेज सेटअप नहीं होगा डिफॉल्ट अर्थ ता व्यतीत कोड आसी ओके सेटा हला मंदिर पूजा तो कौन हम राइट आंसर ओडिशा नेबरिंग स्टेट भीतर जो देखियो झारखंड हम ओके बहुत बढ़िया झारखंड है ना हमर मंजरी घर पाखु पाखी झारखंड को जो रास्ता अच्छी बोधे हाँ ना नहीं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स ओन द नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स हु द फॉलोइंग पर्सन्स ओन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के रहो सीबी रमन अभिजीत बनर्जी हरगोविंद हरगोविंद वेंकटरमण रामकृष्ण सीबी रमन बहुत बढ़िया पाख अच्छा तुम पाखे झारखंड रो डिस्ट्रिक्ट पड़े कमेंट बॉक्स रे लिखो है ना अभिजीत बनर्जी किए गोटे सिंगर टा है ऑप्शन सी ऑप्शन सी भी रमन होगा राइट आंसर ऑप्शन ए है ऑप्शन ए होगा राइट आंसर ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट देखो द लॉन्गेस्ट डैम हीराकुद ऑन महानदी रिवर इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा महानदी रिवर रे थिबा हीराकुद महानदी ऊपर अछि तो सेरा को डिस्ट्रिक्ट अछि है ना मयूरभंज बलांगीर सुंदरगढ़ संबलपुर बहुत बड़ा संबलपुर मंजरी संबलपुर बस संबलपुर रे अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो India is a federal union comprising of 28 states and how many union territories? Okay, 6 7 8 9 हो 8 यूनियन टेरिटरीज अछि हां ओडिसा रे केते इंडिया रे केतरा यूनियन टेरिटरी अछि हां 8 यूनियन टेरिटरी अछि ला स्वायत्त शासित संस्था कौन सा कौन जेटा ये पात्र आसन ओडिया रे ला द स्टेट सिलेक्ट द स्टेट थ्रू व्हिच रिवर महानदी फ्लो ओके को स्टेट रे महानदी फ्लो होची ओडिशा झारखंड ओडिशा छत्तीसगढ़ ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा तेलंगाना छत्तीसगढ़ ऑप्शन डी ओडिशा छत्तीसगढ़ ओके ओडिशा छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर एटा राइट आंसर हो क्योंटा राइट आंसर बोले इटा राइट आंसर बोले ओडिशा छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो which district is also known as the home of elephant tigers due to presence of dense forest okay ओडिशा रो को डिस्ट्रिक्ट रे होम एलिफेंट टाइगर मानकर बहुत बड़ा पर देखा रिप्रेजेंट यू नो डेंस फॉरेस्ट ओके ढेंकानाल बहुत बढ़िया पूजा बढ़िया रही मंदिर कौन हम बलांगीर मालकानगिरी ढेंकानाल गंजाम गंजाम तो नहीं पाख होला ओके ढेंकानाल इज राइट आंसर ओके ऑप्शन सी इज राइट आंसर कौन रहो ऑप्शन सी रहिबो राइट आंसर ढेंकानाल ओके चंदका जंगल को जगह अच्छी कमेंट बॉक्स में लिखो चंदका अरण्य को जगह अच्छी चंदका अरण्य को जगह अच्छी एट द रेट ओके प्रणाम प्रणाम एट द रेट DKNL बहुत बढ़िया select the word which complete the given sentence okay the first Kalinga award was awarded in dash year by dash
या डैश व्यक्ति यूनेस्को 1905 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାହା ହଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଯଦି କଞ୍ଚା ଓଡିଆରେ ଶୁଣିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ସେଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ ନାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଡ କଟକ ବହୁତ ବଢିଆ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କର है ना राइट आंसर कौन है वो 1952 ना 1951 इट इज 1952 ओके 1952 यूनेस्को ऑप्शन बी ओके 1952 इन यूनेस्को ऑप्शन बी ओके चंदका तो खोर्धा रे अच्छा खोर्धा जिल्लाटा खोर्धाटारे भुवनेश्वर आसे ना नहीं use the relationship between the first two words of find missing बोला देखो एटा तो बहुत कष्ट क्वेश्चन था जाइछि हां बस बस देखो सेटा हमर भुवनेश्वर रे कटक पाखा पाखी मिक्स जीरो हला लागी लागी जैतोछि खोर्धा डिस्ट्रिक्ट मध्ये महाराष्ट्र इज राइट आंसर ऑप्शन सी गारडा है जी आ कोन करिया नहीं ऑप्शन सी ता गारा दीती के उठे with the select the word with complete the given sentence the constitution declare India as sovereign dash and democratic republic या भीतर राइट आंसर ता कोन हो को at the rate मंजरी एंड पूजा कौन हो राइट आंसर ए बी सी डी एट द रेट कौन हो जा हो ऑप्शन है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ओके ऑप्शन ए इज राइट आंसर ओके ऑप्शन ए इज राइट आंसर ओके बहुत बढ़िया आइडेंटिफाई द कलर प्रेजेंट इन द इसरोस लोगो ई टाइप रो क्वेश्चन 2022 मसिया रे पचारथिला 2022 मसिया पचारथिला ओडिसा पुलिस रे भी पचारथे पुलिस रे पचारथिला ओडिसा पुलिस रे पचारथिला कोन हो राइट आंसर हला लोगो ऑफ इसरो को कलर द ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ग्रीन एंड ऑरेंज ग्रीन ब्लू ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन ओके नो 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 इट्स नो ऑरेंज व्हाइट ग्रीन हो नहीं ऑरेंज एंड ब्लू ओके ऑरेंज एंड ब्लू हो भला ओके सन्नी क्लास सन्नी डोंट वरी इट इज नॉट द एंड ऑफ द क्लास नेक्स्ट ग्रीन भी अच्छी ओके चेक कर दो टिके रो टिके रो चेक कर दो कहीं लाइव एग्जांपल नहीं जो ना नहीं ये दो कलर है बाबू जी ओके ये दो कलर है समझे और क्या चाहिए किसी को कुछ और चाहिए क्या इसरो का कलर क्या है एवरीबॉडी देखा गला हला कौन अच्छी हला लोगोटा रे ओके छाड़ो देखो क्वेश्चन देखो 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 अरे रे फुल कर दो फुल कर दो बड़ कर दो को भाषा कहउछन माने कोन उल्टा भारी पड़ले माने कोन बुझी पाली माने को भाषा कहउछन माने कोन बुझी पालिनी को एडले कंफर्म कराइबो आहो हिंदी कहले मु भाई मु पाटो कोन उल्टा कोन भार लागी मु कंफ्यूज देई हला
Which period did the Bhakti movement primarily flourish? Okay, Bhakti movement केबे flourish हिला? Okay, देखो right answer कौन होगा यारो? 7 to 17th century. Okay, 7 to 17th century Manjari Puja and at the rate. Okay. ହେଲା next देखो which region of India is considered the birthplace of Bhakti movement? Okay, देखो ये सब जान के दरकार कारण जब पचार दी तारे कौन से एग्जाम में खास कर तुम जो एनटीपीसी वगैरह दो तो ना एनटीपीसी जो मैंने दो तो अबे जो बाहर थी सीधा करेक्ट पचार दी पर है ना तो सेरा पेंटे प्रिपेयर थी ओके दो राइट आंसर कौन रहेगा यार राइट आंसर रहेगा साउथ इंडिया ओके ऑप्शन बी रहेगा साउथ इंडिया ला साउथ इंडिया भक्ति मूवमेंट रो बर्थ प्लेस ऑफ साउथ इंडिया ओके साउथ इंडिया देखो हु वाज द फाउंडर ऑफ यू नो हाँ वृष्ट वृष्ट द भक्ति फिलोसफी ओके एटा ते मो पाटर प्रोनाउंस होनी है ना अच्छा एटा मु भाबु एटा बहुत पिला जान नथो एक आंसर ता मु आर आंसर ता कहि दउ छे राइट आंसर रामानुज है के रहबो रामानुज है the bhakti saint is associated with which of the ramacharita manas okay जो देखिबा the bhakti saint is associated with which of the ramacharita manas तुलसी दास कबीर सूरदास नानक ओके भक्ति सेंट कहाँ से एसोसिएट रामानुज देखो तुलसीदास रामचरित मानस ऑप्शन ए इज राइट आंसर एट द रेट एंड पूजा कौन होगा राइट आंसर देखो तुलसीदास होगा है ना तुलसीदास होगा नेक्स्ट देखो who was the first Sikh guru and a prominent figure in the Bhakti movement okay who was the Sikh guru and the prominent figure in the Bhakti movement Guru Gobind Singh Guru Nanak Guru Arjuna Guru Tegh Bahadur ABCD जय जगन्नाथ है ना राइट है गुरु नानक है ना ऑप्शन बी गुरु नानक इज राइट आंसर है ना पूजा एबीसीडी एट द रेट मंजरी ओके ना देखो हाउ मेनी एंग्लो मराठा वर फाउट यू नो फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर ओके जो देखिबा मराठा और ब्रिटिश मान मध्य केतरा आंग्लो मराठा युद्ध होइतिला ओके केतरा युद्ध होइतिला दुईटा तीनटा चारिटा पांचटा ओके कौन रहो राइट आंसर ओके केतरा चारिटा तीनटा हाँ ओके देखो 3 ओके तीनटा पूजा तीनटा बोला 3 तीनटा आंग्लो मराठा इतला आवार इतला तीनटा आंग्लो मराठा इतला तब देखो what was the primary cause of the first anglo maratha war 1775 to 1782 okay what was the primary cause of first anglo maratha war 1775 to 18 british support the Ranguna's claim to Peshwa title maratha invasion of british territory dispute about the trade route maratha alliance with the french क्या होगा एट द रेट द ब्रिटिश सपोर्ट द रघुनाथ राव claim to the Peshwa title okay 3 minutes the you know which treaty marked the beginning of the first Anglo-Maratha war which treaty marked the beginning of the first Anglo-Maratha war treaty of Salabai treaty of Purandar treaty of Surat treaty of Wadgaon बहुत बढ़िया मंजरी पूजा चार्ज नहीं है 2% अरे चार्ज लगा के पढ़ाई करो यार कौन सा मोबाइल लिया है तुमने बिग बिलियन सेल चल रहा है बिग बिलियन ना कौन कौन चार्ज पर फ्लिपकार्ट रोड अमेजन रोड है ना नहीं अच्छा वाला खरीद दो बहुत ज्यादा समय चार्ज में रहेगा क्या हो गया नेगेटिवली नहीं मुझे मजा करथिले ला केले सीरियसली बनेला टीटी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ओके ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ सूरत ओके ट्रीटी ऑफ सूरत है ना सत्य एबीसीडी सत्य की है ना व्हिच मराठा क्लेम अपोज द ट्रीटी ऑफ बेसेन इन द
सेकंड एंग्लो मराठा वार जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो राइट आंसर टाको आगु बढ़ी चलिबा जल्दी जल्दी है ना व्हिच मराठा क्लेम सपोर्ट द ट्रीटी ऑफ बेसिन सो सेकंड एंग्लो मराठा भोसले सिंधिया होलकर एंड गायकवाड़ एंड पेशवा भोसले सिंधिया एंड गायकवाड़ नहीं किए एबीसीडी सत्य ना एट द रेट सत्य की सत्य तम दुई जन भीतर किए ना सब चेंज करी आउछ तुम माने कौन कहबा तुम है ना ना गुड़ा सब चेंज कर इमती एबीसीडी है ना दर्द दिल है ना ये सब गीत ना सब देखि आस्ता तो है ना हो किसी असुविधा नहीं कौन करवा ओके राइट आंसर भोसले एंड सिंधिया ओके भोसले एंड सिंधिया ओके एबीसीडी सत्य नहीं जा बढ़िया ना जाए तू दो तो है ना रात लगे पाठ पढ़ो बहुत बढ़िया हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वार ओके एटा टिके इंपोर्टेंट दैट इज स्टार मार्क करो होला द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वार के वॉरेन हेस्टिंग्स लॉर्ड वेलेस्ली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस कौन रहबो राइट आंसर कौन रहबो पूजा मंजरी एबीसीडी सत्य सत्य टाइम आउट कर दी किंतु कौन फंक्शन अछि कि टाइम आउट कर दरो द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो मराठा वार कौन रहबो राइट आंसर यारो सत्य एंड एट द रेट मंजरी लॉर्ड हेस्टिंग्स ओके लॉर्ड हेस्टिंग्स बहुत बढ़िया है ना अच्छा एट द रेट नाटा टिके तोंटे क्लासिफाई कर डिक्लासिफाई करो एट द रेट तंग नाटा टिके which treaty was signed with the whole course in the January 1818 during the third Anglo-Maratha war okay treaty of Mandasaru and treaty of Gwalior and Pune treaty of Salwai तो मुना एट द रेट ओके सिटी ऑफ मंदसर ओके मंदसर ओके ऑप्शन ए रहिबो ना नै देखो हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लास्ट इन इंडिया इंडिया रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाटा एटा पचार दी पारे हला ओ ट्रिपल एस ओ डब्ल्यू एस गुडा करे देखो हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लास्ट वेलेस्ली डलहौसी हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस के इंट्रोड्यूस करे हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लास्ट इन इंडिया वेलेस्ली डलहौसी हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस ओके लॉर्ड डेलाउसी ओके कौन है वो लॉर्ड डेलाउसी मन तो देखो व्हाट वाज द कोर प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ओके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और कोर प्रिंसिपल कौन रहउची annexation of state without a natural heir and then they force allies with the British forces and economic control over the Indian states religious conversion in the rulers okay कौन रहेगा राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थ कौन डॉक्ट्रिन ऑफ सेटा तमे कहलो सब्सिडियरी एलाइज ओके तमे जो ऑप्शन बी देलो सब्सिडियरी एलाइज हो सेटा हला सब्सिडियरी एलाइज फोर्स अलाइन विद द ब्रिटिश फोर्स एटा सब्सिडियरी एलाइज हो ओके किंतु जदि हम देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होउची एनेक्सेशन ऑफ फोर्स विद द नेचर जदि तमर कोन अछि आगो भविष्य पीढ़ी नथिबो संपूर्ण जी शासन करिया पर नथिबो देन से जगह लैप्स हे जो से जिनसडा एटा ब्रिटिश ऑटोमेटिक रूल करियो बोली से माने कहउतले ओके ऑप्शन ए रहला देखो which Indian state was the first to be annexed under the doctrine of blast 1848 ओके को प्रथम स्टेट थिला जे कि डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लास्ट द्वारा प्रथमे ब्रिटिश अधीन आसला 1848 रे झांसी नागपुर 17 अवध ओके कौन हो मंजरी एट द रेट एंड सत्य वीर सुरेंद्र साय ऑप्शन बी सतारा ओके सतारा हूँ पद एटा मन रखियो समझला प्रथम जिंस एटा पतले फास्ट हला एटा मन रखिला इन स्टेट वाज फास्ट एडो एनएक्स अंडर द डॉक्टर ऑफ लास्ट 1848 सतारा ऑप्शन सी ओके क्लियर रहबो सतारा मन रखि दो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हु डेवलप द सब्सिडियरी अलाइज सिस्टम इन इंडिया ओके प्रथम देखो कि सब्सिडियरी अलाइज सिस्टम डा इंट्रोड्यूस करला जा कि तमे ब्रिटिश माने
गार्ड करिवे तुमको सब है ना ब्रिटिश मैंने सब गार्ड करिवे तमे तार ऊपर से किसी पाउण देव जदि तुम न दे पारे ब्रिटिश मैंने तुमको अधिग्रहण करदेवे ओके ये टाइप थिला तांकर तो कौन रे राइट डॉन हैज लॉर्ड एलाउसी वेलेस्ली रनर सिंह सेड लॉर्ड क्लाइव रॉकी भाई वाओ रॉकी भाई ओके ओके ऑप्शन बी सिंस 93 वाह वाह ହେଲା since 1936 ओके रजिस्टर्ड तो ହେଲା राइट आंसर को लॉर्ड वेलेस्ली ओके लॉर्ड वेलेस्ली ओके एंड व्हाट इज द की फीचर ऑफ द सब्सिडियरी लाइज ओके अच्छा এটা तो कहि दिली कहि वर्बली कहि दिली तथा मध्ये कहते इंडिया रूलर मेंटेन देयर ओन आर्मी विदाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इंडियन स्टेट्स पेड सब्सिडी टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स इंडियन states could freely from alliance with the other power british troops were banned from indian territories कौन रहबो रॉकी मंजरी एबीसीडी एंड एट द रेट सत्य मंजरी एबीसीडी एंड रॉकी सिंस 1936 कौन रहबो राइट आंसर ହେଲା ऑप्शन बी ओके प्लीज समस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दियो हला राइट आंसर होज ऑप्शन बी हला ऑप्शन बी इंडियन स्टेट्स पेड सब्सिडी टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स ओके ऑप्शन बी which state was first to accept the subsidiary lies in the 1798 Mysore Hyderabad Awadh Maratha Empire हैदराबाद ओके हैदराबाद ओके निजामाबाद हैदराबाद बहुत बढ़िया हैदराबाद रहेगा है ना अरे ओ छाड़ तुम्हारा क्वेश्चन टे ऊपर पड़ाई जो धारे which Maratha leader state was affected by the doctrine of lapse in 1853 okay कौन रहेबो नाना साहेब नाना रानी लक्ष्मीबाई तांत्या तोपे बाजीराव द्वितीय okay which Maratha leader state affected by the doctrine of lapse in 1853 okay रानी लक्ष्मीबाई okay रानी लक्ष्मीबाई okay ऑप्शन बी है ना देखो which state accept the subsidiary lies after the defeat of Tipu Sultan 1799 okay जो देखिए 1799 टिपू सुल्तान को डिफीट इसलिए subsidiary lies affect on the defeat of the Tipu Sultan 1799 okay Mysore Maratha Empire Awadh and Punjab okay which state accepted the subsidiary lies okay रानी लक्ष्मी लानी नो आ रहे नहीं सत्य सत्य मैसूर okay Mysore is the right answer है ना Mysore is the right answer okay मनोज what was the primary cause of most peasant revolt in colonial India okay जो देखिए what was the primary cause of most peasant revolts in the colonial India okay कौन religious conflicts exploitative and land grabbing system high taxes foreign invasion and lack of education बोर्ड ऑप्शन ऑप्शन बी है ना ऑप्शन बी इज राइट आंसर ओके which present revolt took place in Bengal in 1859 to 1860 against indigo planters so indigo planters को विदर रे indigo अरे यार एटा तो इजी क्वेश्चन लेखा है जे ओके कितो जर मु आंसर कहि दउ जेटा indigo रिवोल्ट हला इजी लेखा है मु लिखि दीजी आ कोन करियो हला ओ छाड़ो ए क्वेश्चन एटा एटा क्वेश्चन छाड़ो हला The Mapila Rebellion 1921 occurred in which region of India? Okay, Mapila Rebellion 1821 रे को जगह रेतला मालाबार रेतला अवध उत्तर प्रदेश छोटानागपुर झारखंड एंड देखिबा गुजरात ग्रीस मार्क हां ग्रेस मार्क दिया जब तुम हला 5 मार्क दे दूची तुम तो मापला रिबिलियन को जगह रेतला इट इज मालाबार केरला ओके बहुत बढ़िया मालाबार केरला सत्य है ना व्हाट वाज द की फैक्टर इन मापला रिबिलियन ओके मापला रिबिलियन रो मुख्य कारण कौन थिला कौन फैक्टर थिला मापला रिबिलियन हाई लैंड एंड इविक्शन ऑफ लैंडलॉर्ड्स
labor force and tea planters, British military requirement, ban of religious practices. So right answer high land rents and evictions by landlords. Okay, option A. Okay. Now, which tribal leader led the Munda rebellion? 1869 to 1907 छोटा नागपुर प्लेट. Okay. For the tribal leader led the Munda rebellion in 1899 to 1900 छोटा नागपुर. Birsa Munda, Tilako Maji, Sindhu Murmu, and Titu Mir. Birsa Munda. ओके राइट आंसर है बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा भी कुआ जाए ना मुंडा रिबेलियन. अच्छा ओके which peasant movement was led by महात्मा गांधी in 1917 in बिहार. ओके 1917 रे बिहार रे महात्मा गांधी को द्वारा लिया जाइथिबा मूवमेंट र नाम कोन? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह, पावन रिवोल्ट. ओके कौन रहइबो से जगह रे? रॉकी एंड एबीसीडी. ओके पड़ गए मंजरी कौन बोधे मंजरी पड़ गए एट द रेट पड़ गए. चंपारण सत्याग्रह बहुत बढ़िया है ना. देखो व्हाट वाज द मेन इश्यूज इन चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह मेन इश्यू कौन? हाई लैंड रेवेन्यू, फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन इन थिंकिया सिस्टम एंड इविक्शन ऑफ टेनेंट्स एंड मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयटेशन. अच्छा और देखो एटा तो आंसर जान देलो कोन हे जो किंतु एटा थिंकिया सिस्टम विषय टिके पढी देथिबो होला. थिंकिया सिस्टम विषय टिके पढी थाओ समझ होला. ऑप्शन दिया गए. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. थिंकिया सिस्टम विषय समझते पढ़ता ऑप्शन ना. देखो मन रखो. ओके which peasant revolt was led by the Vallabhbhai Patel in Gujarat 1928? Okay, which peasant revolt was led by the Vallabhbhai Patel and Gujarat 1908? Okay, peasant अर्थ होची चासी. Okay, खेड़ा सत्याग्रह, वर्दोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, पावना सत्याग्रह. Yes, पावना revolt. बरदोली. ओके ऑप्शन बी बरदोली है. देखो व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह कारण कौन थिला? खेड़ा सत्याग्रह 1918 हितला. कौन हितला? लेबर फोर्स लेबर रिफ्यूजल रेवेन्यू रिमिशंस ड्यूरिंग क्रॉप फेलियर एंड हाई इंटरेस्ट रेट बाय द मनी लेंडर्स, एविक्शन ऑफ पीजेंट्स. Refusal of revenue remissions during crop failure. Okay. Next देखिबा which revolt was triggered by the British confiscation of the tribal lands and for the railways and plantations. Okay. कौन रहेगो? Which revolt was triggered by the British confiscation and of the tribal lands for railways and plantations. Okay. Santal rebellion, Indigo revolt, Deccan riots and Pavana revolt. Santal rebellion is right answer है ना. बहुत बढ़िया. Who led the revolt in Bareilly during the 1857 uprising? Okay देखो who led the revolt Bareilly during 1857 uprising? खान बहादुर खान and देखिए बेगम हजरत महल, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई. मुखर्जी भाई पड़ता है भाई. अच्छा नेपाल रो वर्तमान जो इंटरिम पीएम अछंती हला इंटरिम पीएम किए अछन? नेपाल इंटरिम पीएम किए अछन वर्तमान? खान बहादुर खान हो राइट आंसर. ऑप्शन है ना बहुत बढ़िया. मंजरी एबीसीडी एंड रॉकी. ओके ऑप्शन है which city saw the initial spark of 1857 revolt triggered by the Mangal Pandey? Lucknow, Meerut, Barakpur, Jhansi. Right answer है वो बैरकपुर. ओके ऑप्शन है वो कौन? बैरकपुर. दैट ऑप्शन सी. ओके which was the key military leader supporting the Nana Sahib in Kanpur during 1857 revolt? Okay, who was the key military leader supporting Nana Sahib Kanpur during 1857 revolt? Tantia Tope, Waqt Khan and Maulvi Ahmadullah Shah and Azimullah Khan.
तांत्या टोपे बहुत बढ़िया ऑप्शन है तांत्या टोपे है which leader was associated with the revolt of 1857 in Lucknow okay which leader associated with the revolt of 1857 in Lucknow बेगम हजरत महल नाना साहेब कुंवर सिंह मौलवी अहमदुल्ला शाह right begum hazrat mahal okay begum hazrat mahal is the right answer option a okay मन रखिए option a next question who led the revolt in Delhi and was proclaimed the emperor of India by the rebels okay कौन मंगल पांडे बहादुर शाह जफर तांतिया तोपे वक्त खान बहादुर शाह जफर इज राइट आंसर है ना ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट देखो हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज ने 1828 टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज ने 1828 टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी कौन दयानंद सरस्वती राजा राममोहन राय स्वामी विवेकानंद आनी बिसंत Radha Rammohn Roy is right answer है who was the primary object what was the primary objective of the Arya Samaj founded by Dayananda Saraswati okay primary objective of Arya Samaj founded by Dayananda Saraswati promotion of western education revival of Vedic Hinduism and rejection of idol worship and then the establishment of Christian missionaries in the schools of promotion of caste hierarchy मिथुन मिथुन के रॉकी जे मिथुन सिंह रॉकी जे मिथुन सिंह okay option B revival of Vedic Hinduism and rejection of idol worship okay which movement started 1867 in Bombay focus on social reforms like widow remarriage and education yeah अरे यार ना चेंज कर दला थे दिथर तीन थर बोधे चेंज कर दे मिथुन है ना नाटा को दिथर तीन थर चेक कर दे चेंज कर दे भाईटा ना ହେଲା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପରା ହେଲା प्रार्थना समाज ऑप्शन बी है प्रार्थना समाज अरे यार थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू मिथुन एंड सत्य एंड एट द रेट एंड आउ किए रहिले मंजरी हाँ एंड पूजा आउ जे सब आसते समस्त धन्यवाद फॉर पार्टिसिपेट इन क्लास कम से कम घंटा गोटे क्लास चलना आउ थैंक यू एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टे कर दियो प्रतिदिन क्लास टे जॉइन हो हला 8टा बेलू किए भी आसन कहीं एबे सब 8टा बेलू आसो हला 8टा बेलू क्लास आसो जॉइन करो केमित लागुची कोर्स सब सकाळे 11टा रे हुए ओके थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू